Hi friends, this is Mr. Raj welcomes you to Jai Gurudev English Literature. Guys, today I'm here to talk about the Restoration Age. But before talking about Restoration Age, we will talk about some history of the English literature which we have just covered in our previous lectures. सबसे पहले रेस्टोरेशन एज की बात करेंगे, बट रेस्टोरेशन एज की बात करने से पहले हमें हमारे इतिहास, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की इतिहास के बारे में पता होनी चाहिए, सो दैट रेस्टोरेशन एज एंड वट एवर वी आर रीडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर है. सो जस्ट रिमाइंड वंस फ्रॉम एलिजाबेथन एज. हम एलिजाबेथन से एक बार रिवाइज करते हैं. दैट एलिजाबेथन एज दैट वाज फ्रॉम 1558 to 1603 and till 1603. From 1603 there was 1603 to 1625, and that was James first, that is called Jacobean age, and Jacobean age was there from 1603 to 1625. After that, from 1625 to 1649, there was the king that was Charles I, and this period is known as Caroline age. The next period was there, that was Commonwealth period, that is also called Civil War and Interregnum period. Interregnum period, that means there is no race, there was no king, right? So in this period in 1649 to 1660, अगर हम बात करें 1649 से लेके 1660 तक, there was no king, and that is why it is called interregnum period. All right, so in our previous lectures we have just covered all these historical events as well as the literary works. So if you have not watched still, so please visit that videos. I'll just give the all videos in the description so that you will be able to have a look of that. Okay, so आज हम बात करने वाले हैं restoration age, and as well as अगर हम बात करें restoration age की, तो this is also called age of Dryden in the literary figures. अगर हम लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ ड्राइडन के नाम से इस पीरियड को जाना जाता है. एज वेल एज रेस्टोरेशन एज वाज देयर फ्रॉम 1660 टू 1700, 1060 1660 to 1700. So just have a talk about the restoration age, why it is called restoration age. सबसे पहले हम बात करेंगे कि restoration age इसे कहा क्यों जाता है. तो it is called restoration age because there was the restoration of the monarchy की restoration होती है, and that is why चार्ल्स II की restoration होती है, उन्हें वापस बुलाया जाता है, बिकॉज देर वॉज नो किंग एट दैट टाइम. वहाँ उस समय कोई राजा ना होने की वजह से चार्ल्स II को फ्रांस से बुलाया जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज. सो विल जस्ट टॉक अबाउट द सम हिस्टोरिकल इवेंट्स, द पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लिटरेरी वर्क्स. सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन ड्राइडन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दिस एज. जैसा कि मैंने आपको बताया इन द प्रीफेस ऑल्सो दैट जॉन ड्राइडन, इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेचर फिगर, अगर हम लिटरेचर फिगर की बात करें तो जॉन ड्राइडन वॉज डोमिनेटिंग एट दिस टाइम द ओवर द लिटरेचर. एज वेल एज John Dryden was the poet laureate also. He was the poet laureate. He became the poet laureate in 1668. 1668 में वो poet laureate बनते हैं, and that is why he was the representative writer of this age. Second point, restoration of monarchy of Charles II. That is why it is called restoration age.
Next, Charles II earned the title that was मेरी monarch. तो व्हाट इज़ देयर एक्चुअली रेस्टोरेशन है, इसमें क्या होता है कि चार्ल्स टू का जो टाइटल होता है वो टाइटल मेरी मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज द किंग वॉज वेरी हैंडसम, पॉपुलर, सिनिकल फॉर हिज लग्जरी हेडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल। उसकी जो लग्जरीज लाइफ स्टाइल थी जिसकी वजह से उन्हें टाइटल मिला मेरी मोनार्क। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट मेजर इवेंट्स, वी विल टॉक हियर द मेजर इवेंट्स व्हाट टुक प्लेस। मेजर इवेंट्स में क्या हुआ था वहाँ पे? तो दैट वाज थिएटर्स वर ओपन, जैसा कि हमें पता है दैट इन 1642 1642 में सारे थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे बाय द पीरियडन्स, बिकॉज पीरियडन्स का ये मानना था दैट प्लेजर इज सीन एंड सीन इज प्लेजर। अगर आप आनंद लेते हो इट मीन्स ये हराम है, ये पाप है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इस कारणवश से क्या होता है कि पीरियडन्स जो होते हैं वो सारे थिएटर्स को क्लोज करवा देते हैं। बट with the coming of Charles II, he just opened all the theaters in 1660। 1660 ईस्वी में सारे के सारे थिएटर्स वापस दोबारा खुलवा दिए जाते हैं। एज वेल एज there came the literature of the French also. France, actually he was living in the France, so the French literature also came there. And in 1665 and 1666 there came plague। वहाँ पे फिर से एक बार प्लैग आती है, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट सो so serious plague, it was not there, means little bit it just distracted। बट अगर हम बात करें इसके पहले जो प्लेग आई हुई थी एट द टाइम ऑफ चौसर, तो दैट वाज वेरी हैवीली, दैट मीन्स दे 33% पीपल एट दैट टाइम दे वर डैड। बट दिस टाइम द प्लेग केम, प्लेग इस समय आया, बट दैट वाज नॉट सो हार्मफुल, इस बार सो हार्मफुल नहीं थी। ओके, द नेक्स्ट इज हियर इन 1666 देयर वाज ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ग्रेट फायर, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई, बहुत भीषण आग लगी हुई थी, इन विच मोर देन 13,000 बिल्डिंग्स बर्न्ट डाउन। आप समझ सकते हो दोस्तों कि 13,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जल गए, 13,000 से ज़्यादा बिल्डिंग जल गए। हाउ ग्रेट फायर इट वॉज ऑफ लंदन। So it came in 1666. Let's move to our next points. Charles II accepted religious tolerance but secretly favored Catholicism। चार्ल्स सेकेंड जो था एक्चुअली उस समय क्या था ना कि प्यूरिटन्स का ज़माना था, बोल बाला था। एंड जब चार्ल्स सेकेंड वापस राजगद्दी में आता है तो वो प्रिटेंड करता है, वो दिखावा करता है दैट आई support the Puritans, but in heart, by heart, he used to follow Catholics, right? So secretly he favored Catholicism. In 1679-81, एक्सक्लूजन क्राइसिस वॉज देयर ऑफ ड्यूक ऑफ मनमथ। तो ड्यूक ऑफ मनमथ का क्या था ना, इस समय चार्ल्स सेकेंड का जो एक इलिजिमिट सन जो था, उन्होंने रिवोल्यूशन किया हुआ था अगेंस्ट चार्ल्स सेकेंड। At that time, one more event, the major event was there, that was two political parties emerged. That was first Whigs, that second is Tories। विक्स को हम लिबरल के नाम से जानते हैं एंड टॉरीज देवर कंजर्वेटिव्स। तो विक्स लिबरल थे और टॉरीज जो थे वो कंजर्वेटिव्स थे। टू पार्टीज इन इंग्लैंड, फर्स्ट इज विक्स एंड द सेकेंड इज टॉरीज। As well as most event is their most important thing date is there, that in 1685 Charles II died। चार्ल्स सेकेंड 1685 में डेथ को पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
And the most interesting thing is that there was no legal son of Charles II. Charles II के पास there were so many children, there were so many sons, बहुत सारे उत्तराधिकारी थे, बहुत सारे बेटे थे, उत्तराधिकारी नहीं, बहुत सारे बेटे थे, but they were illegal. That means जायज कोई नहीं था. There were so many affairs with mistress, and with them there were so many children also, but there was no a single legal son. You can understand at that time. Okay, so here when there was no son of Charles II, James II became the king of England from 1685 to 88. Now who is the James II? James II कौन है भाई? तो James II जो था, he was the son of Charles II. He was the Charles II, not Charles फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड था, एज वेल एज जेम्स सेकेंड ऑल्सो. नाउ व्हाट हैपेंड दैट 1685 जेम्स स्कॉट ड्यूक ऑफ मनमाउथ, चार्ल्स सेकेंड इलिजिटिमेट सन, लीड द मनमाउथ रिबेलियन. अब क्या होता है कि 1685 में ही जो चार्ल्स सेकेंड का इलिजिटिमेट सन होता है, जेम्स स्कॉट जो ड्यूक ऑफ मनमथ होता है, ही लीड अ रिबेलियन दैट वाज कॉल्ड मनमथ रिबेलियन. At the same time, there was a glorious revolution. Glorious revolution, what is this glorious revolution? तो ये glorious revolution की अगर हम बात करें तो that was the Protestant called James Protestant son-in-law William of Orange. अब क्या होता है ना कि जेम्स सेकेंड राजगद्दी पे तो बैठ जाता है, बट द पीपल वर नॉट हैप्पी बिकॉज ही यूज टू फॉलो द कैथोलिसिज्म. ओके, कैथोलिक्स को वो फॉलो किया करता था, एंड ही यूज टू टॉर्चर, ही यूज टू हेट द प्यूरिटन्स. प्यूरिटन्स को वो हेट करता था. इसके लिए क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट जो थे उन्होंने उनकी बेटी और दामाद, उनकी बेटी का नाम मेरी एंड दामाद का नाम विलियम ऑफ ऑरेंज, जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे, उनको बुलाया जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ देम, उन लोगों के मदद से जेम्स सेकेंड को राजगद्दी से निकाल बाहर फेंका जाता है. दैट मीन्स एक्चुअली जेम्स सेकेंड खुद पे खुद वो इतना कमज़ोर हो जाता है, उसकी आर्मी इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि वो खुद अपने पद का त्याग करके वहाँ से भाग जाता है. एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. दैट मीन्स ये एक ऐसा समय था कि खून का एक कतरा बहे बिना सिंहासन बदल जाती है, राजनीतिक का पोजीशन पद बदल जाता है, एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल ब्लड ड्रॉप ऑफ ब्लड. ओके, इन द रेस्टोरेशन एज, if we talk about in the restoration age, in poetry the classical forms of the heroic couplet and the ode became popular. और इस समय जॉन ड्राइडन की वजह से पोइट्री में क्लासिकल फॉर्म्स और हीरोइक कॉपलेट का यूज पॉपुलर हो चुकी थी. द नेक्स्ट, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर राइटर्स एंड देयर मेजर वर्क्स. अब हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की, दैट हु वर द मेजर राइटर्स एंड व्हाट वाज देयर मेजर वर्क्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट जॉन ड्राइडन वाज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर. जॉन ड्राइडन रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स थे, एंड दैट इज वाई ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ वर्क्स, मेनी वर्क्स, बट आई हैव जस्ट रिटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज एब्सलम एंड एक्टिफोल. ओके, Absalom and Actifol, that is from in 1681. Next, Samuel Pepys. Samuel Pepys was a diary writer. Okay, he was a diary writer, the great diary writer of this time. Next is there George Etheridge. George Etheridge is there. The most important work, that is Love in a Tub. Love in a Tub. Love in a Tub. It came in 1664. Love in a Tub, that came in 1664. As well as if we talk about at this time, then 1664 Love in a Tub, that was the subtitle The Comical Revenge. इसकी अगर हम सब टाइटल की बात करें तो दैट इज़ द कॉमिकल रिवेंज.
The next work is there, she would if she could. The most important work, she would if she could, that came in 1668. The next we have John Vanbrugh. John Vanbrugh, the most important work is there, that is the relapse. The relapse which came in 1696. The relapse जो 1696 में आती है, and the subtitle is there, Virtue in Danger. Virtue in Danger. The next we have, that is William Wycherley. William Wycherley, the most important work is there, The Country Wife. The Country Wife. And the next author we have, writer we have, that is William Congreve. William Congreve is very famous for, he is known as the supreme master of comedy of manners. Actually क्या था कि restoration एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज वेरी फेमस. रेस्टोरेशन एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत लिखे जाते थे. दैट वॉज वेरी फेमस एंड विलियम कॉन्ग्रीव इज कंसिडर्ड द सुप्रीम मास्टर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स. His most important work from the point of from the examination point of view also, The Way of the World, which came in 1700. The next we have Aphra Behn. Aphra Behn, she is very prominent writer of that time. She was a lady and she is also known as the first professional writers. इट मीन्स कि वो अपने राइटिंग की वजह से सर्वाइवल कर पा रही थी एंड वो दैट इज़ वाई शी इज़ नोन एज अ फर्स्ट प्रोफेशनल राइटर ऑल्सो. And she has a name also, code name, that was Astrea. Actually she worked as a spy for चार्ल्स सेकेंड. वो चार्ल्स सेकेंड के दरबार में चार्ल्स सेकेंड के लिए उन्होंने एक स्पाई का वर्क भी किया, जासूस का वर्क किया. एंड जब वो जासूसी के काम कर रही थी तो उनका नाम था, हर कोड वॉज एस्ट्रिया, राइट. हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज द रोवर, विच पब्लिश्ड इन 2 editions. First one is in 1677 and second came in 1681. The next we have, that is Orinoco. Orinoco, it's the story of slave market. It's very important. If you read, it's very interesting also. You will just get a lot of knowledge. Interesting story it is. You will be very happy to read it. Orinoco, and it came in 1688. So this is all about all the major writers and their major works we have talked in this video. And as well as मैं suggest करूँगा कि if you like the video, if you like the presentation, then please like, share and subscribe, as well as comment in the comment box. If it is good, then comment good, comment positive. If you feel something improvement should be there, अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार होने चाहिए, तो please comment that also, so that I will be focusing over that. I will be able to focus over that and I will improve that also. As well as मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल ब्रिटिश हिस्ट्री की, इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज चला रहा हूँ, where we have completed now, right now, today, restoration age. Now we will just go for our next video, that will be enlightenment age. So stay tuned with Jay Gurdev English Literature and have a good day. Bye.